हरिओम तत्सत। आपकी आज की क्लास में स्वागत है। आज हम प्राणायाम करेंगे। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो कुछ प्राणायाम का जो अभ्यास है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। बाकी जो भी टाइप रहेंगे उसका मैं कुछ ब्रीफ में दिखाऊंगी, तो आप उसको डेली अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आपका प्रैक्टिस बना रहेगा उतना ही हम उसको स्ट्रेच कर पाएंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कपालभाति। तो कपालभाति एक्चुअली ये क्रिया है और उसमें अगर हम याम मतलब कंट्रोल जोड़ देते हैं तो हम उसको प्राणायाम की तरह यूज़ कर पाते हैं। तो हम कपालभाति करेंगे, उसमें 60 पंपिंग्स करेंगे, ऐसे 3 राउंड्स करेंगे और हर राउंड टोटल 60 पंपिंग्स के बाद 1 मिनट के लिए हम ब्रेथ होल्ड करेंगे। ये जो पूरा पंपिंग्स एंड ब्रेथ होल्ड ये चीज़ जो पूरा रहेगा इसको हम 3 टाइम्स करेंगे और इसेंशली आपको भी ये 3 टाइम्स करने की ही ज़रूरत है। और अभी जैसे अगर आप 50 पंपिंग्स ही कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके उसे 60 बढ़ा सकते हैं, फिर 60 से 70 और 70 से 80 भी हमें पहुंचना होता है। और जब हम ये कर पाते हैं उसके बाद ही हम कुछ एडवांस प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए आप ये मेरे साथ कर सकते हैं, साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता है कपालभाति कैसा होता है। जब भी हम कपालभाति करते हैं, जब भी मैं 1-2 बोलूँगी तो मैं हन 2 बोलूँगी, तो हन में मैं भी आपके साथ आपको हेल्प कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप एक्सहेल आउट करें। जब हम एक्सहेल करते हैं तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपके नाक के पास में कोई मक्खी या मच्छर कोई बैठा है, तो आप कैसे सिर्फ नाक से उसे एक्सहेल करके आप उसे मॉस्किटो को हटाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका स्टमक अंदर जाएगा, कुछ ऐसा, तो अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। और फिर जब मैं 2 कहती हूँ तो इनहेल होएगा, तो एक्सहेल पे आपका 1 जाएगा और इनहेल पे 2 पे इनहेल जाएगा। तो उसका ऐसी मतलब आपका जो 2 रहेगा, जो इनहेल रहेगा वो पैसिव रहता है। आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस जो आपका है, जो आपको एफर्ट लगेगा वो आपके एक्सहेल पे लगेगा। जैसे रहेगा जब आप सेकंड एक्सहेल भी लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बीच में इनहेल करते रहेंगे। तो आपका जो इनहेलेशन रहेगा वो पैसिव रहेगा, एक्सहेलेशन पे आपको एफर्ट लगाना है। 1-2, तो जब 2 होगा तो आपका इनहेल है। तो लेट्स स्टार्ट 60 पंपिंग्स ईच। अगर आपको कंफर्टेबल है, और एक्चुअली ये बहुत बेटर प्रैक्टिस है कि हम आईज क्लोज कर सकते हैं, सो यू कैन क्लोज योर आईज। अगर आपको आईज नहीं भी क्लोज करना है तो आप अपने जो गेज है, जो आप जो देख रहे हैं उसको आप कोशिश करिए एक ही जगह पे देखें, डिस्ट्रैक्टेड ना रहें, बिकॉज all these kriyas and all these practices are for increasing your concentration power, right? So आप hands को चिन मुद्रा में रख सकते हैं, easily relaxing position पे बैठ के। all the time आपको अपना neck and back straight रखना है और आप एक comfortable position बैठ के अपने hands भी relaxed मोड पे रख सकते हैं, जो भी आपके लिए comfortable है। And we'll start. Inhale deeply, exhale, inhale deeply, exhale again. With this inhalation we will start. Inhale deeply and we'll start 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Inhale, exhale. Inhale deeply, exhale. Now breathe in completely, comfortably. Fill your lungs about 3/4 of the capacity or comfortable breath inhalation and hold for a minute. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale. We will start with another round. Exhale. Inhale. And we'll start. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Inhale, exhale. Inhale deeply, exhale completely. Inhale, exhale, very nice. Inhale deeply and exhale. And you will hold the breath for a minute again. This time try to close your eyes when you are holding the breath at least. Inhale deeply, comfortably, and hold your breath for a minute.
Now exhale slowly and gently and inhale deeply. Exhale, inhale, exhale completely. Inhale deeply. We will start the third round. Exhale. Inhale and we'll start. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, inhale, exhale, inhale deeply, exhale completely. Very nice. Inhale deeply, exhale. Now we will hold the breath for the one last time and close your eyes if they are open. Sit up straight. Inhale comfortably and fill your lungs about 3/4 and hold for a minute. Sitting up straight. Exhale slowly now and relax. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale completely and exhale. Now you can open your eyes. So this was a very short practice of a Kapalbhati जो क्रिया है, क्रिया के साथ को हम कैसे प्राणायाम में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अनुलोम विलोम भी मैंने करवाया है, उसके वेरिएशंस या ऑल्टरनेट ब्रेथ, उसके बारे में बस थोड़ा सा हम बता देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो अनुलोम विलोम एक्चुअली बेस्ट प्राणायाम की टेक्निक है. वो नॉट ओनली हमें नाड़ी शोधन
जो है हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ हैं उसी का नॉट ओनली प्योरिफिकेशन करती हैं, पर ये एक्चुअली बेसिक एंड बेस्ट प्राणायाम टेक्निक है। तो जो हमारा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग रहता है उसमें हम नॉर्मल बस इनहेल एक्सेल, इनहेल ऐसे वाला भी कर सकते हैं, मतलब ये विदाउट रिटेंशन है, और उसके बाद हम रिटेंशन के साथ भी इसको कर सकते हैं। और जब हम रिटेंशन इंक्लूड करते हैं तो उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम साथ में मिलके अनुलोम विलोम प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड उसमें जो भी वेरिएशंस रहेंगे उसमें हमें कैसे कितना देर होल्ड करना है या कैसे कितनी टाइम्स प्रैक्टिस करना है वो भी आप ज़रूर साथ में समझिएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम और आगे वाले प्राणायाम भी कर सकें। अभी हम इसको बहुत बेसिक लेवल से लेकर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे ले जा रहे हैं, और जब हम एकदम इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हो जाएंगे तो हमें एडवांस प्राणायाम करना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियोस में बने रहिए और अभ्यास करते रहिए। हरिओम।